Okay, so the second question that you asked me today is about equilibrium. So the basic concept of equilibrium is दो चीजें उसके अंदर. First of all, there are reactions that go to completion. These are reactions के जो जब वो होते हैं तो वो complete हो जाते हैं. For example, I have HCl. I add it to magnesium. Then, provided whatever my limiting amount is, it will completely react and produce magnesium chloride and hydrogen gas. जो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कब खत्म होना. But other than that, there is no other reason that the reaction should stop, or reaction will produce less than what it's expected to. These kind of reactions usually go to completion. Okay. Now there are some reactions that don't go to completion. What that means is कि आपने वो reaction करते हुए you have all the equipment that you need, you have all the right condition and everything, but the nature of reaction is कि वो completion की तरफ जाएगा ही नहीं. For example, nitrogen reacting with hydrogen to produce ammonia. अब उसूली तौर पे we would expect कि जितना nitrogen and जितना hydrogen they react and they produce all the ammonia. But the nature of this reaction is such that as ammonia is made up, it starts to decompose and go back. So this reaction never goes to completion. An example, let's say this equation shows that 1 mole HCl होगा, so 1 mole hydrogen will be produced. So if I have 3 moles of HCl, I would expect 3 moles of hydrogen gas to be produced. But over here, this equation tells me that 1 mole of nitrogen will produce 2 moles of ammonia. But at the same time, this is a reversible reaction, which means कि कभी भी if I start with 1 mole of nitrogen, I will never end with 2 moles of ammonia. I will have less than 2 moles. Why? Because it's a reversible reaction, it will never go to completion. ये वापस आ जाएगा. तो अगर ये सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा होता तो 1 will produce 2 of ammonia, but it's a reversible reaction, which means ये कभी भी 2 से कम ही रहेगा. It will never produce 2. इसके ऊपर MCQs भी आते हैं कि how much amount can it सर produce. समझ नहीं आ रही. क्या नहीं समझ आया, पूछो क्वेश्चन. सर वो जो आप कह रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के वो मोल्स सेम होंगे, वो वाला पार्ट नहीं समझ आया. देखो, the idea of this sign is कि कभी भी ये reaction complete नहीं होता. Reaction complete होने का मतलब क्या है? That whatever amount of nitrogen and hydrogen you have, they will produce all the ammonia that they can. This arrow tells me no. They will produce ammonia, but some ammonia will go back and produce hydrogen, nitrogen again. So you will never run out of all the nitrogen, all the hydrogen that you have. In this reaction, if I start with some amount of magnesium and I have excess HCl, I have all the HCl that you need, then all the magnesium will react. No magnesium will be left over at the end, and I will have this and this at the end. ठीक है? But यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होगा. If I start with whatever amount of nitrogen, कभी भी वो पूरी तरह से use ही नहीं होगा. It will produce some ammonia, but some will go back. So eventually the reaction never completes 100%. That is what reversible reaction means. It's a reaction that goes in either direction, which means वो कभी भी complete नहीं होता. वो कुछ ना कुछ ये एंड पे पड़े रहेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी होंगे एंड पे, और अमोनिया भी होगा एंड पे. नाउ उस सारे प्रोसेस में एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. Dynamic equilibrium is a special stage in this situation. Obviously, when the reaction starts, nitrogen collides with hydrogen, produces ammonia. Then after a while, that ammonia collides with other ammonia and produces hydrogen, nitrogen. वो forward और backward दोनों में होते रहते हैं. But एक टाइम आता है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इसकी डेफिनेशन एग्जामिनर आपसे पूछता है. Dynamic equilibrium is a stage at which rate of forward reaction equals the rate of backward reaction.
What this means is that when nitrogen collides with hydrogen, it produces some amount of ammonia, and at the same time some ammonia is converting back to nitrogen and hydrogen. Initially you have more nitrogen, you have more hydrogen. ये सिलेंडर है, इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, शुरू में कोई अमोनिया नहीं है, आपने सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड किया हुआ है, तो दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर एंड दे आर गोइंग टू मेक अमोनिया, सो वी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है. नाउ आफ्टर अ व्हाइल इस सिलेंडर में कुछ नाइट्रोजन भी होगी, कुछ हाइड्रोजन भी होगी, कुछ अमोनिया भी होगा, एंड दैट अमोनिया विल स्टार्ट गोइंग बैक, तो वी से कि बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है. लेकिन ऑब्वियसली रिएक्शन कौन सा तेज होता है? जिसकी कोलिजन ज्यादा होती है. The reaction that has more collision at the same time, that is faster. So if you have more nitrogen and more hydrogen, obviously they're going to collide more in the same time. You have less ammonia, तो उसकी collisions भी less होंगी. तो we will say कि forward reaction is faster. क्यों? ज्यादा collisions इनकी हो रही है in the same amount of time, और इनकी कम collisions हो रही हैं, तो ये backward slow है और forward तेज है. लेकिन after a while क्या होगा? After a while you will have lots of ammonia available. तो अब अमोनिया की भी कोलिजन होना शुरू हो जाएंगी. सो इवेंचुअली देयर कम्स अ टाइम कि जितनी स्पीड से अमोनिया बन रहा है उतनी ही स्पीड से ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन रहे हैं. और फिर क्या होगा? उसका ऑटोमेटिकली इंपैक्ट ये आएगा कि जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज होके अमोनिया बनेगा उतना ही वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा बन जाएगा. So the concentration of reactants and products does not change. I'll give an example. Apple sells microchips to Samsung. Samsung sells LED screens to Apple. अब शुरू में सैमसंग का बिजनेस ज्यादा है, तो सैमसंग इज सेलिंग मोर एलईडीज टू एप्पल टू मेक आईफोन्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो शुरू में एप्पल इज पेइंग मोर क्योंकि सैमसंग से वो चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं. एंड आफ्टर अ व्हाइल सैमसंग स्टार्ट्स टू बाय मोर चिप्स फ्रॉम एप्पल. सो इट कम्स टू अ पॉइंट कि जितने पैसे एप्पल उसको सैमसंग को पे कर रहा है उतने ही पैसों का सैमसंग उससे वापस माइक्रोचिप खरीद रहा है. तो ओवरऑल दोनों को जीरो का फर्क पड़ा पैसों में, क्योंकि जितने पैसे एप्पल ने पे किए उतने ही सैमसंग ने वापस पे कर दिए. लेकिन बिजनेस तो हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि बिजनेस स्टॉप हो गया. द बिजनेस इज स्टिल हैपनिंग. एप्पल इज स्टिल सेलिंग माइक्रोचिप्स एंड सैमसंग इज स्टिल सेलिंग एलईडी स्क्रीन्स, बट द ओवरऑल प्रॉफिट दैट दे आर बोथ मेकिंग फ्रॉम दिस इज जीरो. क्यों? क्योंकि जितना वो प्रॉफिट सैमसंग बना रहा है उतना ही वापस वो एप्पल को बना रहा है. डू यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल? दैट सिचुएशन इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि जो फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही बैकवर्ड हो रहा है, तो ओवरऑल चेंज कोई नहीं आ रहा. रिएक्शन फिर भी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ये नहीं आप कह सकते कि अमोनिया ज्यादा बन गया है, नाइट्रोजन ज्यादा बन गया या हाइड्रोजन ज्यादा बन गया. वो जितने हैं वो उतने ही है, क्योंकि जितना ये यूज होके अमोनिया बनता है उतना ही वापस ये प्रोड्यूस भी हो जाता है. आर यू क्लियर ऑन दिस व्हाट डायनामिक इक्विलिब्रियम इज? बोल दो, कम ऑन. यस, नो, कुछ समझ नहीं आई, कुछ तो बताओ. ओके, थैंक यू. यस सर, समझ आ गई. ठीक है. ओ गॉड, ये यूट्यूब पे इतने कमेंट्स आ गए. ओके, एनीवेज, सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन एग्जामिनर आपसे पूछता है. नाउ हियर्स द थिंग, because you are going to obviously be, let's suppose आप एक फैक्ट्री ओनर हो, आपने अमोनिया बनाने की फैक्ट्री सेटअप की है, यू आर पेइंग पीपल, यू आर पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू हैव बॉट द लैंड, ऑल ऑफ दिस, आपने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया तब जाके आप अमोनिया बना रहे हो. अब जब आपने फैक्ट्री को ऑन किया है, जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज हो गया अमोनिया बना रहा है उतना ही वापस अमोनिया चला जा रहा है. यू आर नॉट गेटिंग एनी मोर अमोनिया. Is that a situation which you would like to be in?
मोस्ट लाइकली नो, बिकॉज आपकी फैक्ट्री चल रही है, यू आर स्टिल पेइंग द बिल्स, यू आर स्टिल पेइंग द लेबर, बट अमोनिया नहीं बन रहा और उसकी तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, इट्स नॉट चेंजिंग क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया. तो यू विल नॉट वांट दैट सिचुएशन टू हैपन. So what do? We always disturb the equilibrium so that we are able to get a situation where we don't have equilibrium. And secondly, what we try to do is we always push equilibrium to the side that we want. In this situation, we want ammonia to be made. So that is why we will push the equilibrium towards this direction. इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इज पुश्ड फॉरवर्ड और इक्विलिब्रियम फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है. सो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन एडजस्ट द इक्विलिब्रियम. उनमें से 3 हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज टेम्परेचर. व्हाट डज टेम्परेचर डू? टेम्परेचर इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज पार्टिकल्स दैट दे हैव. इन दिस सिचुएशन, this is an exothermic reaction. Agar forward reaction is exothermic, then backward reaction is automatically endothermic. What it means is that when ammonia is made, yani ki equilibrium comes forward, the energy is released. When equilibrium goes back, the energy is absorbed. Now, to understand how equilibrium will behave, we have to understand what we call Le Chatelier's principle. Le Chatelier's principle very simple सी चीज है. It says whatever change we do, equilibrium will try to undo that. Okay? Whatever change we do, equilibrium will try to undo that. अच्छा, तो अगर मैं यहां पर टेम्परेचर राइज कर देता हूं, I do this reaction at a higher temperature. Remember one thing, all of this is happening in one closed container. उसी में नाइट्रोजन है, उसी में हाइड्रोजन है, उसी में अमोनिया. अगर क्लोज कंटेनर नहीं होगा ना, तो इक्विलिब्रियम कभी स्टैब्लिश नहीं हो सकता, बिकॉज दीज कैन ऑटोमेटिकली एस्केप, और उसकी वजह से कभी भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो सकेगा. सो वी नीड अ क्लोज कंटेनर फॉर दिस इक्विलिब्रियम टू हैपन. नाउ इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, देन what will the equilibrium try to do? It will try to decrease the temperature, right? क्योंकि जो हमने करना है, इक्विलिब्रियम ने उसके ऑपोजिट करना है. So if we increase the temperature, then equilibrium will try to decrease the temperature. Now tell me one thing, temperature exothermic में increase होता है या temperature endothermic में increase होता है? Exo में temperature increase होता है. Thank you, Daniel. So which means that if equilibrium goes to this side, temperature will increase, and if equilibrium goes to this side, temperature will decrease. If I do this at high temperature, then equilibrium will try to reduce the temperature, which means it will go backwards. क्योंकि वहां पे temperature कम होगा. So how will we write it in the exam? We'll say that at high temperature, equilibrium shifts to the left side because that is endothermic. ठीक है. और हमने क्लियर एक्सप्लेन कर दिया कि why does it shift to the, कि वो किस साइड पे जा रहा है और वो क्यों जा रहा है. वो इस वजह से लेफ्ट पे जा रहा है क्योंकि उस साइड पे टेम्परेचर कम होगा, एंड दैट्स व्हाट द इक्विलिब्रियम ट्राइज टू डू. इट ट्राइज टू रिवर्स एनी चेंज यू प्रोड्यूस ऑन इट. तो इसका मतलब है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर रिकमेंडेशन इफ आई वांट टू क्रिएट मोर अमोनिया, शुड आई डू दिस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, तो आपकी क्या सजेशन है उसके ऊपर? Let's break the question now. The question says, Ji Mustafa, go on. Nothing, sir. So let's break the question now. The question is, what is your recommendation if you want more ammonia to be produced? Now for that, let's try to understand, what does equilibrium mean? If I want to create more ammonia, then I want equilibrium to go forward. If equilibrium goes forward, temperature increases. यानी हमने किसी तरह से इसको ऐसे करना है कि इक्विलिब्रियम ट्राइज टू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि जब वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तभी वो फॉरवर्ड आएगा. तो इसका मतलब है वी शुड डू इट एट लो टेम्परेचर.
right? So if we do the reaction at low temperature, then equilibrium will try to automatically increase the temperature. It will go to the exothermic side, which is forward. So that is what we should do. Okay. Now, there is a problem with that. If you do the reaction at low temperature, it also slows the reaction down. तो यहां पर हमारे पास दो related concepts हैं. One is the concept of rate and one is the concept of yield. Rate means कि reaction तेज या slow हो रहा है, कि कितने time में कितना product बन रहा है. That is rate. Yield is कि reaction product ज्यादा बना रहा है. अगर कभी भी कोई reaction forward आएगा, it will increase the yield. So what we do is industrially, we try to prefer rate at the cost of yield even. कि ठीक है, हम टाइम बचाना चाहते हैं, वो फॉरवर्ड ना आए खैर है, but the reaction should be fast. That's what we usually prefer. Okay. So yes, Ahmed, you are absolutely right. We want to keep the rate high. So what do we do? Even though we know कि अगर ये हाई टेम्परेचर में मैं करूंगा तो yield कम हो जाएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चले जाएगा. We'll still go with that. We'll still be like, देखो, if we increase the temperature, equilibrium goes back. What does that mean? Yield will decrease, but rate will increase. So industry में हम rate को prefer करते हैं. तो यहां पर दो concept आ गए. Number one, you need to understand that if we want yield to be high, then that is the exothermic side. We should keep the temperature low. But that will reduce the rate. So we will not prefer that. तो अगर कभी भी reaction में rate कम हो रहा है और yield ज़्यादा हो रही है, हम फिर भी उसको prefer नहीं करेंगे. Okay. So this is also a 2-mark question in the exam, that why is this reaction done at high temperature? क्योंकि clear सी बात है, अगर ये high temperature पे करोगे, go back. Yes, Musa? So the clear situation is that if you keep the reaction at high temperature, equilibrium will go back, which means आपकी yield कम होगी. We're like, that's fine. We will compromise. The word compromise is important. आपने आंसर जब देना तो compromise की बात करनी है. That we keep a higher rate at the cost of greater yield. Okay. Second factor is pressure. Pressure किस पे depend करता है? Pressure depends on gaseous moles. Remember this. Gaseous moles. यहाँ पे देखो मेरे पास ये भी गैस है. This is a gas. This is a gas. Now here's how you will look at this equation. You will not look at individual things. You will just look के इस साइड पे कितने गैस के मोल्स हैं और इस साइड पे कितने गैस के मोल्स हैं. So if you look over here, I have 1 plus 3, 4 moles of gas on the left side. 4:2. And 2 on the right side. Absolutely, Ahmed. What that means is that the 4 wala side has a higher contribution to pressure. तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये ज्यादा कोलाइड करेंगे. ठीक है. So that's what you have to understand. If you increase the pressure, then equilibrium tries to go जहां पे प्रेशर कम है, यानी कि जहां पे मोल्स कम है. So equilibrium goes towards this side. So obviously this we can make a recommendation in this case कि लेफ्ट साइड पे 4 है, राइट साइड पे 2 है, तो ऑटोमेटिकली इनका कंट्रीब्यूशन टू प्रेशर कम है, इनका ज्यादा है. So we will say that keep a high pressure, so equilibrium comes to this side. If you keep a low pressure, then equilibrium will try to go towards the higher side, which is this. Equilibrium backwards आ जाएगा. So जब भी pressure की बात होगी, just look at gaseous moles, nothing else. Exam में वो आपसे कहता है कि what will happen to equilibrium if the pressure is increased. So we will say equilibrium will go towards the forward side, or we say equilibrium shifts forward or equilibrium shifts to the product side. Why? Because there is less gaseous moles here. The word gaseous is important. अगर आप खाली moles लिखोगे आपको marks नहीं मिलेंगे. Let me give you an example. मेरे पास ये reaction है. This reaction is reversible for a very small amount of time. Tell me, should I do this reaction at high pressure or low pressure? Sir, low. Why?
The answer is correct. Why? So because the products are breaking down. Yes, because the products have more gaseous moles. Absolutely. क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे 0 गैसेस है, यहाँ पे हमारे पास ये एक गैस है, तो 0 और 1. So when you do a low pressure, equilibrium goes towards this side. So automatically the yield is higher, your product will be more. Good, Ahmed. Oh, sorry, Abdullah. The third case that we have, third factor is concentration. Concentration बहुत simple सा case है. जो चीज आप ऐड करोगे उसकी collision ज्यादा होगी. It's as simple as that. Whatever you add will collide more. So if I add more ammonia, it will collide more. It will go to this side. If I add more ammonia, it will collide more. It will go to this side. In other words, equilibrium will try to undo whatever we do. If we add more ammonia, equilibrium will go to the side with less ammonia. So in this equation, I have ammonia here. I don't have any ammonia here. So equilibrium will go to this side. Similarly, now this is something that many students get confused with. मुझे बताओ हाइड्रोजन कहाँ पे है इस इक्वेशन में, लेफ्ट और राइट साइड पे? लेफ्ट साइड पे. Now, is this not hydrogen? So yes. It's not. Yes, absolutely. Left, sir, left. Yes, हाँ बिल्कुल ठीक है. देखो, this is not hydrogen. This is ammonia. Hydrogen is part of that. Hydrogen separately तो नहीं है ना? Hydrogen separately सिर्फ यहाँ पे है, तो you're right कि left side पे hydrogen. So अगर examiner says that more hydrogen is added, what is the effect on equilibrium? If I add more hydrogen, equilibrium will try to go towards less hydrogen. And that is this side. क्योंकि इस side पे तो hydrogen है ही नहीं, इस side पे hydrogen. And that is the whole idea of equilibrium. Okay. Ahmed's question is that if we keep low temperature, we could save cost. And that is true. That is true. If we keep low temperature, we will save cost, but at the same time, we will need more time, and time is money. So if I say we'll still keep a high temperature for most reactions. Ji Abdullah. So can you just repeat the main points for this one? Sir, moti baatein bas repeat kar do. Main point is simply the definition of dynamic equilibrium. The idea that whatever we do, whatever change we produce, equilibrium will try to undo that change. So if you increase temperature, it goes to the endothermic side. If you decrease temperature, Sir, आपके पास किसी पे notes वोट्स पड़े हुए हैं? I'm sorry, Musa, दोबारा बोलो. Sir, मैं कह रहा हूँ आपके पास की notes वोट्स पड़े हुए हैं? Notes, हाँ, fact sheet होगी, उसमें ये notes लिखे हुए हैं. मैं आपके साथ link share कर दूंगा class के end पर. Similarly, pressure is dependent on gaseous moles. So whichever side has more gaseous moles, that will be obviously अगर high pressure होगा तो वो उसकी तरफ जाए, उससे opposite जाएगा, और low pressure होगा तो उसकी तरफ जाएगा. And then concentration is simply what you add more. Surface area and catalyst have no effect on equilibrium. That's important. Catalyst does not affect the equilibrium. Okay. Acha. So that was reversible reactions. Somebody mentioned के energy profile diagram बता दूं या energetics का बता दूं. So energetics it's a pretty straightforward concept. You have two kinds of reactions. कभी भी reaction जब होता है तो उसमें या energy gain करता है या energy lose करता है. Those are the only two options. So equilibrium, कोई भी reaction एक खास level of energy से start करता है. हम इसको ये बोल देते हैं. This is where it starts. और यहाँ पे मेरे पास energy है on the y-axis. और यहाँ पे मेरे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है. उसको टाइम भी बोल सकते हो, आप प्रोग्रेस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. सो इधर एनर्जी है, इधर प्रोग्रेस है. Now here's what happens. The reaction is obviously, whenever a reaction happens, it first needs to gain energy to break the initial bonds. इसको बोलते हैं activation energy. So equilibrium will always, कोई भी reaction जब होगा, it will always need to gain energy. Okay, which means that the energy of the graph will go up. कोई भी reaction है, जैसा मर्जी है, it has to gain energy. It has to go up. Now it doesn't matter whether you draw a straight line or whether you draw a curve or whatever you do. Doesn't matter. The shape of the graph doesn't matter. What matters is that initially all reactions need to absorb energy.
this energy, ये जो इसने absorb की है, this one, we show it as an arrow which is starting at the starting point and ending at the top. ठीक है, तो ये हमारे पास ये energy है. This is called activation energy. It is the energy required to start a reaction. Activation energy के बारे में एक चीज ध्यान में रखें, that it's always positive. It is always absorbed. It is never negative, no matter what the reaction. It has to be absorbed every time. Okay, then what? Once it gets to a point where it has absorbed the activation energy, then the reaction will happen and it will release energy. अब वो कितनी energy release करता है उससे पता चलेगा कि वो exo है या endo है. If a reaction releases more energy than it absorbed, मतलब जितनी उसने absorb किया वो उससे भी काफी नीचे चले गया. उसने इतनी absorb की थी लेकिन वो इससे ज्यादा नीचे आ गया. Then it has released more energy than it absorbed. We will call it an exothermic reaction. That it has given energy out more than it has absorbed. Exam में अगर इसके बारे में आपने लिखा हो, you can say that energy absorbed in bond breaking, which is this energy, is less than energy released in bond making, which is this energy. Now, Sir, I have a genuine question. जी पूछें. Sir, I just want to know that, are you married? जी, I'm married. How is that relevant? थोड़ा लेट हो गए हैं आप. यार क्लास का फ्लो ना खराब करो भाई. It's okay मूसा, कोई बात नहीं. I think he's looking. Okay. अब ये देखें. In this case, what has happened is that energy released, जो इसने ये release की है, it is less, and energy absorbed, it is more. Okay. So अब because energy released is less and energy absorbed is more, so overall it has absorbed the energy. So हम कहेंगे this is an endothermic reaction. Okay. So on this side we have a reaction जिसने जितनी absorb की है उससे ज्यादा उसने release कर दिया. और यहां पे this is a reaction जितनी absorb की है उससे कम इसने release कर दिया. So if a reaction absorbs more, we call it endo, and if a reaction releases more, we call it exo. Okay, and that's the two kinds of reaction that we get. अब यहाँ पे equilibrium क्या करेगा? Catalyst क्या करेगा? If I add a catalyst, then the catalyst only affects the activation energy. वो इसको कम कर देगा. So I will not have to go to a higher level. वो थोड़े से level पे जाके it will start to come down. Okay. So this is my new activation energy. And we say that this is the catalyzed activation energy. So that's what a catalyst does. It lowers the activation energy by providing an alternative pathway. एक नए तरीके से reaction को करता है ताकि reaction हो जाए. It will start at the same level, it will end at the same level, but it will need less activation energy. Obviously, it will save energy cost, it will save time. And lastly, we have what we call delta H, and delta H is always the arrow from the starting point to the ending point. So that is delta H. अगर ये negative है यानी कि नीचे को है तो ये exothermic है, और अगर ये ऊपर को है तो ये endothermic है. And that is the whole chapter on this situation. Okay? Sir Ahmed? Yes. Sir, I love you, sir. Okay, ठीक है. अच्छा पेपर देना. Sir, do you love me? बस अल्लाह आपके अच्छे रिजल्ट्स ले आए, और क्या चाहिए. All right. Any other thing जी that सर, you बस want to आपकी ask? दुआओं की जरूरत है. Any other thing you want to ask? सर redox reactions बस go through Redox करवा reaction. सकते हैं उस पे क्या करना है? सर go through करवाते हैं, थोड़े confusing लगते हैं. Redox is again, जब भी आपने उसका क्वेश्चन करना है, you have to go back to the definition. And what's the definition? The definition is simple. If A gives electrons to B, let's suppose उसने electrons दी,
So we will say that A is oxidized and B is reduced. So Okay. because B gained electrons and A Yes. lost electrons. Yes, exactly. In other words, if B gives oxygen to hydrogen or to A, then we will say that A is oxidized and B is reduced. And electron की जगह आप hydrogen भी कह सकते हो. Hydrogen, not hydrogen ion. Remember this. Hydrogen है, hydrogen ion नहीं है. So ये Okay. चार definition है. You just have to go with them every time. अगर charge ज़्यादा हो रहा है या जिसको हम oxidation state बोलते हैं, if that is increasing, that's oxidized. If oxidation state या charge is decreasing, it's reduced. And similarly hydrogen electron अगर आ रहे हैं तो reduced है, जा रहे हैं तो oxidized है, और oxygen अगर मिल रही है तो oxidized है, और oxygen अगर lose हो रही है तो वो reduced है. Now, in general, there are a few oxidizing agents and reducing agents that we need to know about. For example, we know that metals usually lose electrons to non-metals. Not every time, but mainly. So we will say that metals are what? They are reducing agent. And non-metals are oxidizing agent. Okay. Similarly, there is a thing called potassium iodide. When it reacts with something that is a oxidizing agent, मतलब ये खुद reducing agent है, but ये अगर किसी oxidizing agent से react करता है, then it goes colorless to brown. जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है it loses electron. So अगर कभी भी ये reaction कर रहा है, इसका मतलब है the other thing has gained electrons, the other thing has been reduced. Similarly, there's a thing called KMnO4, potassium manganate 7. And usually both of them are not reacted just as their own. इनको हम हमेशा एसिड के साथ वाटर में डिसॉल्व करके रिएक्शन करवाते हैं. Now what these will do is that KMnO4, it will go purple to colorless when it reacts. So इसका कलर आपको याद करना है. It will go purple to colorless. फिर कांटेक्ट और हेबल प्रोसेस करा दे. वो तो सिर्फ याद करना है, उसमें कंडीशंस और उसकी इक्वेशंस. वो मैं आपको फैक्ट शीट देता हूँ, फैक्ट शीट से सारा कुछ मिल जाएगा. Okay. All right. मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर ही देता हूँ. सर हम फेल है कल. ऐसे नहीं कहते. अपनी तरफ से पेपर दो, फेल होना पास होना अल्लाह पे छोड़ दो. ओके देन, अगर कोई और सवाल हो तो ग्रुप में भेज देना. एंड ट्राई टू डू क्वेश्चंस. कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, नोट्स पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि कल आपने पेपर में जाके कॉन्सेप्ट नहीं लिखना, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने. ठीक है. सो ये वर्कशीट्स हैं इसकी काफी ज्यादा मेरी वेबसाइट पे, वहां पे जाओ, वहां से उनको सॉल्व कर लो. मैं देखता हूँ अगर मेरे पास पिछले साल के ग्रेड 10 के एग्जाम्स भी हों तो मैं आपको वो भी ग्रुप में भेज देता हूँ. ठीक है. ऑलराइट देन, अल्लाह हाफिज़. नहीं सर प्लीज हमें मत छोड़ो सर. नहीं छोड़ा भाई, आई एम हियर इफ यू नीड मी. जाओ अभी चलिए सर सही है. वर्कशीट्स कर दुआ लो, करें अच्छी सर. प्रैक्टिस, सो यू आर गुड. ओके सर. अल्लाह हाफिज़. बाय. सर आप Yes. व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज सकते हैं? आई लेफ्ट बाय मिस्टेक. व्हाट्सएप ग्रुप का Yes. शॉर्ट दे देता हूँ. मुझे आप टेक्स्ट कर दोगे अपने नंबर से, मैं सर आपको मैंने किया है आपको. अभी किया है. जी. चलो आई विल ऐड यू. ओके. अल्लाह हाफिज़ सर. गुड लक.